back to our UPSC Prelims PYQ series, in which we are solving PYQs from 1979 to 2024. Here, we'll be going theme-wise and subject-wise topics, and the same question you can appear on our PYQ portal on the Edukemy website. और ये सेम चीज के Edukemy के क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. I just want to remind you that PSP Prelims Support Program 2025 starting from 9th of December 2024. Apart from that, the same series is going on for geography, science and technology, environment. Do make full use of this initiative. So today's topic is schedule. It is one of the most important topic for prelims. So let's start. Okay, before starting schedule, you should know something. At first schedule talked about territories. Second schedule talk about emoluments. Emoluments मतलब allowances, salaries related. Third talks about oath and affirmation. Fourth is about Rajya Sabha. Fifth is about scheduled areas. Sixth is about other scheduled areas. Seventh, it is the most famous. It deals with federal provisions. Eighth deals with official language. Ninth deals with land reforms. 10th deals with anti-defection law. 11th deals with panchayats. And 12th deals with municipalities. अगर मैं इसके mnemonic को देखूं, if you see tiers of old PM, इससे आप easily याद रख सकते हैं. Revisiting it again, T for territories, which is first schedule, E for emolument, second schedule, affirmation, third schedule, allocation of seats in Rajya Sabha, fourth schedule, scheduled areas with fifth schedules, other scheduled areas like four special states, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura is sixth schedule, seventh schedule deals with federation, basically federal provisions, eighth schedule deals with official languages, ninth schedule deals with land reforms, L, 10th schedule deals with anti-defection law, 11th schedule deals with panchayats, P, 12th schedule deals with municipalities. तो इससे क्या बना? Tiers of old PM. अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो शेड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा. तो लेट्स गो. So let's start. Question number 1. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. Within a state, a notification of an area as scheduled area take place through an order of the president. Now, it is kind of correct statement, yes, है ना? जो शेड्यूल्ड एरिया का जो नोटिफिकेशन आएगा तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू ही आएगा, है ना? सेकंड, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक. इट आल्सो सीम्स लॉजिकल, राइट? लोएस्ट जो क्लस्टर ऑफ विलेज होगा एक डिस्ट्रिक्ट में और हाईएस्ट जो होगा डिस्ट्रिक्ट होगा. देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट्स. नाउ इट सीम्स पॉलिटिकल. जनरली ऐसा काम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट करते हैं. अगर गवर्नर कर रहे होते तो इट वाज करेक्ट, बट सीएम कर रहे हैं. अगर सीएम करेंगे इट वुड बी मोर ऑफ पॉलिटिकल, right? So this statement is wrong. Automatically 1 and 2 are correct and 1 is wrong. So only 2 are correct. Answer is B. See, as per Article 244, the Constitution expression scheduled areas means any areas as the President by order declare it to be scheduled areas. What are the criteria? कि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज होना चाहिए, एक वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, राइट? And the governor of that state would send that report, right, to the president. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. If the particular area is brought under fifth schedule of the constitution, which one of the following statements best reflect the consequence of it? Now, just apply that tiers of old PM. So TEARS of old PM. Here, fifth schedule is 1, 2, 3, 4, 5. Fifth is scheduled areas के बारे में बात करता है, right? Scheduled areas of tribal states. तो अब उसके बेसिस पे आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, राइट? वन बाय वन विल एलिमिनेट द ऑप्शंस. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन द एरिया. लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो है 11th एंड 12th शेड्यूल के बारे में बात करता है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज से. तो ये नहीं है. दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी. दैट इज अब्सर्ड स्टेटमेंट. द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Now, this seems very logical. The answer here is A. Got it? The answer here is A. Governor can make regulations for the peace and good governance of the scheduled area after consulting the Tribal Advisory Council. Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land by tribal to non-tribal members. So let's move to next question. But before moving to the next question, we are launching our Prelims support program
2025. Here, some of the components are listed here. It has practice test and analysis sheet, marathon session, book reading sessions, revision sessions, sectional test, school and test, UPSC mixed test, current affairs revision, CSAT support, personalized mentorship, test to test discussions, and all India mock test Prayas. It is starting from 9th of December 2024. Do check out this. And link is in description below. Here are some of the our achievements of PSP. We say that PSPs are USP. 45% of the students are qualified in prelims. They attempted with more confidence. They have boosted accuracy, and the 50% hit rate of the questions were there. Right? So let's move to next question. Question number 3. With reference to anti-defection law, consider the following statements. The law specifies that the nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. No. The law do not provide any time frame within the presiding officer has to decide a defection case. Yes. Okay. This case, this line or this case was always in the news, right? The law do not provide any kind of time frame to speaker to decide on a defection case. That is leading to multiple issue. इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था. Answer here is B. 10th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे 10th शेड्यूल का क्वेश्चन था, a nominated member of a house becomes disqualified for being a member if he joins any political party after the expiry of 6 months. I'm repeating it again, after the expiry of 6 months. Hence, they can join any political party within 6 months. Okay, without the fear of disqualification. Now, there is no time frame mentioned in a law during which the presiding officer must decide. Okay, it becomes a major issue. इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. Now come to next question. Question number 4. The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. Very interesting question, right? If you remember that we have tiers of old PM. ठीक है, to know the schedule. अब अगर 9th schedule की बात करूं तो क्या से डील करता है? It is dealing with land reforms. ठीक है, L for land reform, 9th schedule. अब अगर आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म्स किनके टेन्योर में आया था, तो कैन इजीली गो विद द आंसर, राइट? तो मोरारजी देसाई वाज नॉट देयर, इंदिरा गांधी वाज नॉट देयर, है ना? इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद देयर वाज कॉल फॉर लैंड रिफॉर्म, तो जवाहरलाल नेहरू वाज द पर्सन इनके दौरान, इनके टेन्योर के दौरान लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा, राइट? द आंसर हियर इज A, Jawaharlal Nehru. So 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. Now, this 9th schedule is important for you. UPSC can ask or can go deeper into this. Just read the solution. Then after the Kameshwar Singh case versus State of Bihar case, the government got apprehensive that whole agrarian reform programs, इसी का मतलब land reform होता है, would be endangered. To ensure that these reform legislation does not run to heavy weather, the legislature amended the constitution in 1951 under the prime ministership of Jawaharlal Nehru. यहाँ से 9th schedule आ रहा है under article 31B, right? The 9th schedule contains a list of laws, central and state laws, which cannot be challenged in courts, but now it is open to judicial scrutiny. ठीक है, IR कोहलो केस, IR कोहलो के बारे में 2007 का केस है. It has been asked in UPSC in mains, right? So it is a very important topic. Just remember that. Let's move to next question. Question number 5. Under which schedule of the Constitution of India can transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, तो इट वॉज 5th शेड्यूल विच टॉक्ड अबाउट ट्राइबल लैंड और ट्राइबल एरियाज. ठीक है, तो आंसर अगर मैं देखो TEARS, ऐसे इज बेसिकली 5th शेड्यूल. शेड्यूल एरिया में कौन रहता है? ट्राइब्स रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ है. तो आंसर इज 5th शेड्यूल, राइट? 12th शेड्यूल नहीं होगा, 3rd शेड्यूल नहीं होगा फॉर श्योर. ठीक है, 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल लैंड, राइट, इट इज ट्रांसफर ऑफ लैंड, नॉट रिफॉर्म. तो ये भी नहीं है. ठीक है, इजी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. है ना, पार्लियामेंट कैन प्लेस अ लॉ. यस, इट कैन प्लेस अ लॉ, राइट? अगर पार्लियामेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? सेकंड पॉइंट, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. नाउ दिस सीम्स absurd and extreme statement, तो ये गलत होगा. ठीक है, द आंसर इज ए, है ना, पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ एंड द वैलिडिटी ऑफ लॉ कैन बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट, राइट? इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. नाउ ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ए है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following schedules of the Constitution contains provision regarding anti-defection? Very unique and very easy question. बहुत हलवा था, है ना? तो अगर हम इससे जाते हैं tiers of old PM,
you will automatically get your answer. Fine. 10th है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. D for defection. ठीक है, defection is 10th, तो अपने आप आंसर हियर इज 10th. राइट. कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, ये 10th. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. आंसर हियर इज डी. गॉट इट. Let's move to next question. Very easy questions. Question number 8. With reference to Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched? Now, this question was asked in 2004. Now, एक चीज पे ध्यान दो कि यूपीएससी पहले जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता था और अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. द क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट करेक्टली मैच्ड. राइट. तो पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है ना, तो ये तो करेक्ट हुआ, ये तो नहीं है. राइट. देन फॉरेस्ट इज ऑल्सो इन करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, ये भी नहीं हुआ. राइट. हाउ कैन स्टॉक एक्सचेंज बी ऑन कॉन्करेंट लिस्ट? राइट. इट इज मोर सुटेबल फॉर यूनियन लिस्ट. ठीक है, आंसर हियर इज बी. स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट नहीं होगा, यूनियन लिस्ट होगा. राइट. एंड यू कैन सी इन द यूनियन लिस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक along with stock exchange and future market is in union list. ठीक है, I think it's very much logic that union government संभाले ये सब चीजें. Next, move to next question. Okay, before moving, we are coming with PSP 2025, which is starting on 9th of December, and our series, our unique UT series or YT series is ongoing also for science and technology, geography, and environment, in which we are decoding PYQs from 1979 to 2024. So do make the full use of this initiative. Right? Next question, question number 9. The state which has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in Lok Sabha is. अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. पहले यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पे फोकस कर रहा था, यूसी 2000 और ये वाले क्वेश्चन भी. राइट, पता है तो पता है, बट यू कैन स्टिल गो विद द लॉजिक. ठीक है, अब इस पे आते हैं. बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. Which state has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in Lok Sabha? इन जनरल कौन से सीट्स में होंगे? उस स्टेट में होगा जहां सबसे ज्यादा ट्राइब्स एग्जिस्ट करता है. तो बिहार में ट्राइब्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, 2000 की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, 2000 में ही आया था. गुजरात में नहीं है कंपैरेटिवली. ठीक है, एमपी वाज वन ऑफ द मेजर स्टेट दैट हैड ट्राइब्स. 2000 में ही एमपी एंड सीजी था. फाइन, इट एग्जिस्टेड. बिहार प्लस झारखंड था. ठीक है, बट एमपी प्लस सीजी कंसिस्ट ऑफ more tribes, more scheduled tribes rather than others. ठीक है, उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड था. ठीक है, द आंसर इज डी. बहुत फैक्चुअल है. इट कैन गेट कंफ्यूजन बिकॉज 2000 में पूछा हुआ है यूपीएससी ने. अगर ये नवंबर से पहले हुआ होगा एग्जाम, राइट, तो एमपी प्लस सीजी कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स. ठीक है, तो तुक्का आप लगा सकते हो. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वाले क्वेश्चन. आपने देखा था 2004 में भी यूपीएससी ने वही पूछा था. अगेन 1993 में पूछ रहा है. ठीक है, वहां भी 2004 में पब्लिक हेल्थ का मेंशन था. अगेन यहां भी पब्लिक हेल्थ का मेंशन है. फाइन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट? ठीक है, यू नो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये जो है ये स्टेट लिस्ट में, ये तो नहीं होगा. ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. ट्रेजर ट्रोव एंड कैपिटेशन टैक्सेस, ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है. पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज मोर लॉजिकल बिकॉज यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट both are willing to take steps for population control and family planning. So most logical answer here is A. But yes, exam condition में it may get tricky, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा. Answer here is A. Population control and family planning is in concurrent list. अब now this is your note making. ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में लिखोगे. ये यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, वापस वो पूछ सकती है. फाइन. concurrent list क्या होता है? That both central government or union government and state government has the power to legislate on those subjects. ठीक है, इट इज इन 7th शेड्यूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ, ये फैक्चुअल पता होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है तो अपने आप सेकंड एंड फोर्थ कट गया, तो अपने आप 1 2 एंड 3 सही हो गया. क्लियर. ठीक है, तो मामला जो फंस रहा है, इट इज बेसिकली फॉर 62nd विच इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, इन जनरल हमने कुछ ऐसा सुना नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जहां 62nd विच इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज. तो ये गलत है. तो आंसर हियर इज ए. So we have done or touched 10 questions of schedules, which you can see. We have touched from 2024 till 1993. Thank you.